So students, we have to deal data every day, right? So the various things, the various values we take, उनको जो analyze करके there are some terms which we use to compare the data, right? And these terms are known as measure of central tendency, right? अब ये word देखिए central tendency. When we say mean, what is the meaning of mean? बच्चे please stop talking. Anti Lotus section, Lotus, please sit down, both of you. Sit down. Yes. When we say mean, what is mean? Suppose you have a class of 40 students, right? Your teacher conducted a test of 100 marks. No talking, rows, second bench. Please stop talking, right? So your teacher conducted test. The different students have scored the different marks. So if teacher have to see what is the total marks or the average marks the class has got, so then he will find out the mean of the data, mean of the marks. How he or she will find it? He will add all the marks. Please stop talking, Lotus. Second bench, center line, Sadaji, please stand up. Please stand up. Please stand up. Come to the mic. On करो mic जरा. What's the problem to you? सर काफी रहता है. तो बाहर चला गया बेटा अगर तुम्हें सारी क्लास को डिस्टर्ब करना है. You are disturbing the 3 sections. You can please go out of the class. Sit down now. Yes, students. When we talk about the mean, it is the average, right? Whatever data you are taking, the average of that data is known as mean, right? Different type के डाटाज होते हैं बच्चों. सबसे पहला होता है हमारे पास raw data. What is raw data? Raw data is if we have some observation. For example, आप लोग 40 स्टूडेंट है क्लास में, सबके मार्क्स लिए हमने. अगेन लोटस प्लीज स्टॉप टॉकिंग. फर्स्ट बेंच, सबके मार्क्स लिए बच्चे हमने, सबके मार्क्स टोटल कर दिए एंड डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. दैट इज द मीन ऑफ द रॉ डाटा. नाउ इन क्लास 10th you have to find out mean of the group data. We have 3 different methods to find out the mean. First method is known as direct method. Second is known as assumed mean method. And third method is known as step deviation methods. So now here we will only be dealing with the group data, right? Is this clear? So we have 3 methods to find out the mean of the group data. First one is the direct method, then is the shortcut method, or another name for shortcut method is assumed mean method and step deviation method. Is this clear? Now student, please tell me what is the direct method. What is the direct method? Anybody can tell me what is direct method? I'll take the example. Let's say here we have the class interval. Let's say it is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. Let's say these are the different class intervals. Now, here comes the frequency. Let the frequency is, this is the frequency. Now, if we have to find out the mean of this data, I'll solve this question, same question by all the 3 methods, right? So that you can understand the concept. This is clear, students? First of all, this is given class interval. We have to take class marks. Now, what is class marks? Bache, these are known as different classes, right? Different intervals. This is known as
This is known as the lower limit of the class, and 10 will be the upper limit, right? Lower limit of the class, upper limit of the class. To find out the class marks, you add both of them and take their average, that is mean, right? So what will be the class marks for this class? What will be the class marks, students? 5. What will be the class marks for second class? 10 plus 20, 30. 30 divided by 2, 15. Similarly, you can find out the class marks for all the different classes. Is this clear? These class marks are represented by xi, and this frequency is represented by fi. Now, for direct method, you have to find out fi xi. fi xi means, बच्चे ये लोटस में क्या इशू है, क्या आपकी नोटबुक्स का क्या प्रॉब्लम आ रहा है? यार आप एक काम करो, पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लो सारे. हैव एवरीवन गॉट द असाइनमेंट? कर लो बेटा, प्लीज डोंट डिस्टर्ब द क्लास. एक बार कर लो सारे लोग. हाँ जी, हो गया अब डिस्ट्रीब्यूशन या नहीं? Right, students. So now we have to take the product of fi and xi. 5 into 5, 25. 7 into 15, 105. 25 into 11, 275. 35 into 6, 210. 45 into 10, 45 into 2, 90. Right? So we have find out the fi xi. Ma'am, please, I think now you take the sum total of all these. This is represented by fi xi, summation fi xi. This sign is sigma or called the summation. इन सबका बच्चों टोटल कर लिया आप लोगों ने. 15, 3. This comes out to be 705. Now similarly take the sum total of frequency. This summation fi. This comes out to be 31. Is it clear, students? So you have taken the sum total of fi as well as summation fi xi. Now mean is represented by x bar. In this method, the formula for mean will be summation fi xi over summation fi. Now it is 705. So divide 705 by 31. So this comes out to be 62. 885 again 62. So this comes out to 23 to 30 approximately. It comes out to be 22.8, right? So mean by the direct method for this data comes out to be 22.8, right? Now we move on to the second method, students. Second method is known as shortcut method or assumed mean method, right? How to do this? Till finding out the class marks, everything is same. After that, that question changes. किस तरह से change हो रहा है बच्चे देखिए जरा. Now, what you have to take, whatever the class marks you have taken, you have to assume the centralmost term as the mean of the data. Here, the central term comes out to be 25. So we take this as A, that is assumed mean, right? Now, you have to find DI. What is DI? It is xi minus A. What is xi? This whole. And what is A? 25. So here
xi minus a. Xi is 5. 5 minus 25. It will be minus 20. 15 minus 25 minus 10. 25 minus 25 0. 35 minus 25 10. 45 minus 25 20. Now here this is your di xi minus a. Now you have to find FIDI, means the product of frequency and di. Now what it comes out to be? 5 multiplied by minus 100, minus 20. This comes out to be minus 100. 7 into minus 10, minus 70. 11 into 0, 0. 10 into 6, 60. 20 into 2, 40. Now you have to take the sum total of all these. It is minus 170 plus 100. So this comes out to be minus 70, right? So summation FIDI comes out to be minus 70. Now the formula for mean is x bar equal to a plus summation FIDI over summation. यहां तक बच्चों क्लियर है? If yes, please raise your hands. Please raise your hand. अगर कोई डाउट है तो you can ask the questions. Right? So summation FIDI upon FI. What was A? 25 plus summation FIDI is minus 70 and FI is 31. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों. अब 70 को डिवाइड किया जी 31 से 62, 8, 80. This again comes out to be 62, approximately 2.26. 25 minus 2.26. So this will comes out to be 22.74. And the first method we have find out approximately the same 22.8 के approx आया था. So by this method this is again the same thing. Anything not clear बच्चों? Anything not clear? Is this clear जी? Is this method clear? So we'll do one question by this method. Yes, students. Can you see the case study based question, bachon? Can you see the case study based question on the second page? Yes. Now, if you read this case study, read the following text and answer any 4 questions, right? So there are 2 tables, table 1 and table 2. We have been given some question, some referring to the table 1 and some referring to the table 2. Now, if you see the question number 3 for the reference to the table 1, the mean of the given data, please do this question. Please do this question. Case study based question, question number 3. Case study based question, students, question number 3. Now, here the data is given age in years 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, and 45 to 55, and 55 to 60. And their number of cases. Number of cases will be frequency, students. This is your FI. This is 6, 11, 21. Now please tell me which method you will apply here. Please tell me, student, which method you will apply. हाँ जी, माइक ऑन करके कौन बताएगा बेटा? Let me call someone. Sunflower. सेंटर लाइन में थर्ड बेंच पे जो स्टूडेंट है प्लीज कम. सेंटर लाइन थर्ड बेंच, प्लीज कम.
जल्दी आ जाओ, दोनों लोग आ जाओ प्लीज। माइक ऑन कीजिए बेटा। यस स्टूडेंट। हाँ जी बच्चे, प्लीज टेल मी विच मेथड यू विल अप्लाई इन दिस क्वेश्चन। यस, नो डिस्कशन। हाँ जी आप। हाँ जी, डायरेक्ट मेथड। ओके, एंड विच मेथड यू विल अप्लाई? Direct or assumed mean method? You can use any of the two methods, right? Right? If you want to do the heavy calculation, go for the direct method. अब आप अपने अगर कैलकुलेशन इजी करनी है, then go for the assumed mean method. Please do it. Everyone, please do this question. Do by any of the method. B option. हाँ जी, B option. D option 35.4. Yes, sir. Okay, let me check. Take the class marks here. हाँ जी, किन किन स्टूडेंट्स ने किया अभी तक? प्लीज रेज योर हैंड। किस किस, एक ही स्टूडेंट की आवाज आई मुझे बस। हाँ जी, लोटस एंड रोज, एनी वन ऑफ यू हैव डन? Has any one of you has done lotus and rose? जल्दी से फिनिश कीजिए। My humble request to the teacher present, please check their notebooks whether they are doing it or not. The teachers present in sunflower and lotus, they are requested to please check the notebooks of the students. Any teacher in lotus? Manji, how many students have done now? Please raise your hand. What is the problem in lotus and rose? None of the student has done. Sir, please check in section rows. No, Manji. That's 35. माइक और माइक बेटा, माइक पे आके थोड़ा माइक हाथ में ले लो बेटा, फिर बोलो, आवाज क्लियर नहीं आ। 35.375. 35.375. Which method you have applied, beta? Direct method. Please tell me what are the class marks? 10, 20, 30, 40. 10, 20, 30, 40, 60. I mean, FI exercise. बोलिए होगा FI exercise. Minus 120. First of all is 60 and 8. No talking, no talking.
हाँ जी बच्चे, what is the sum total of fi xi? What is the sum total बच्चों? Wait, 30. The formula is summation fi xi over summation fi. Wait, 30. The frequency total. Wait, 8 3s are 24, 43, 8 5s are 50, 30, 8 3s are 24, that comes out to be 60, 35.374, which is the nearest one? 35.4 will be the right answer, bacho. Is it clear? Is this clear? Now, the third method to find out the mean, we have is step deviation method. We have step deviation method. Now, what is step deviation method? Take any one question from this table and find out the mean of that. Right? Let's say, students, we have the question number 2. What is the question number 2? We have class 0 to 5. We are just taking its data, nothing else. This is the data. Find out the mean of this data by step deviation method. See how to do this. The first step is same. Take the class marks. What will be the class marks, students? Please tell me what is the class marks for the first class? Yes. 0 plus 5 by 2. What it comes out to be? 2.5. What will be for the next class? Right? Is this clear, bacho? Now, like the assumed mean method, in this method you have to take the assumed mean, and centermost term is 12.5. So we'll take this as assumed mean, right? There you come to find out you used to find out di. Here we will find out ui, and ui is equal to xi minus a upon h. Students, what is h? What is h? Class width. In this case, class width is 0 to 5. Upper limit minus lower limit. It is 5. Right? So ui will find out xi minus a upon h. Means now here 2.5 minus 12.5. But what it comes out to be? 2.5 minus 12.5 upon 5. What it comes out to be? minus 2 आ रहा है बच्चों? बच्चे 2.5 minus 12.5 becomes minus 10. Minus 10 upon 5 is minus 2. Similarly, this will come out to be minus 1, 0, 1, and 2. Is it clear? Clear or not? Any doubt, student, till now?
Any doubt? Now it is again the same process, Fi multiplied by Ui. This is Fi, this is Ui. 10 into minus 2, minus 20, 15 into minus 1, minus 15, 12 into 0, 0, 20 into 120, 9 to the 18. So this comes out to be the Fi Ui. Now, what is the frequency, students? Frequency is 66. And what is the sum total of summation Fi Ui? This is 38. This is minus 35. So दोनों को solve किया तो you come out to be 3. Now the formula for mean in this method is A plus summation Fi Ui upon summation Fi multiplied by H, right? So here you have to multiply it by H. A plus summation Fi Ui summation Fi into H. Right, students? So this is the formula, right? So what is the value of A? 12.5 plus 3 over 66 into class interval is 5. इसको multiply किया तो 22. So this comes out to be 12.5 plus 5 by 22. इसको solve करके आंसर बताइए बच्चों क्या आ रहा है. Please note down and solve this. .22 आ जाएगा अप्रॉक्स. So this the mean of this data comes out to be 12.72. The mean of this data comes out to be 12.72. Is it clear? Is it clear or not? Is it clear or not? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं बेटा. Next concept is median of group data. Aji, what is the meaning of median? Can anybody explain me what is median? What is median? Yes, it is the middlemost term. अगर हम बच्चा एक डाटा ले रहे हैं, उसको हम अरेंज कर रहे हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, एंड देन व्हाटएवर द टर्म्स कम्स इन द मिडल मोस्ट में आती है, दैट इज नोन एज मीडियन, राइट? ठीक है. मीडियन को करने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड वन कॉन्सेप्ट. देयर आर टू थिंग्स which you have done in the previous class. If you have the total number of terms, see, देखिए बच्चे, अगर आपके पास टोटल टर्म्स इवन है, if total terms are even, हम एक डाटा लेते हैं बच्चों, जैसे सपोज कीजिए हमने डाटा लिया, how many terms are these? How many terms बच्चों? 8. तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई यहाँ पे? Even. Now if you have to take its middle most term, बच्चे मिडल मोस्ट टर्म कैसे लेते हैं? एक इधर से कट किया, एक इधर से किया, एक इधर से किया. So now you are left with two terms. How many terms are there in the middle? 2 terms. Now if you have to find the median, what you will do? You will add these 2 terms and their average.
So what is the median in this case? 5, right? Now in the second case, if number of terms are odd, and then four, 5, 9 हो गई बच्चों. Now if in this case you have to take the middlemost term. So there is only one term left. So what will be median? Any doubt in this? Any doubt? Now understood one thing. Now when we have taken this data, this is the first term. Let's say this is x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, and x8, right? So these are the terms. First term, second term, third term, fourth term, fifth term. Now, what is the median here? What is median? It is the sum of fourth and fifth term. N is 8. So the formula for the median when the total terms are even is n by 2h term plus n by 2 plus 1h term divided by 2. Just see it carefully, students. N by 2h term, matlab 8 by 2 means fourth term plus fifth term divided by 2. What is the fourth term in data? What is the fourth term? हाँ जी बच्चों, this is the fourth term. Yes or no? This is the fifth term. So fourth term plus fifth term divided by 2. This is the median. Have you understood this thing or not? Earlier it used to be in the class 9th, but now this topic is not there in the 9th, so we need to explain this topic to you people. Is this clear? Yes or no? Okay. Now we come to the, if the number of terms are odd, your median is 6. In this case, the formula for median is n plus 1 by 2th term. Right? What is the meaning of this? Total terms are, in this case, 9. So 9 plus 1 by 2th term means 10 by 2 yani ki fifth term. Is this clear? What is fifth term? First term, second, third, fourth, and this is fifth term जी. This was the median, right? बच्चे दो चीजों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. 5 and fifth term, they are two different things. When I am taking this is the fifth term, not the 5. Median is fifth term, not 5. You need to understand this thing, right? Is this clear? So now, when you have to find the median of the group data, we'll take one example and see. Let's say take any question from the this assignment only. Let's say students take the case study. Now in the case study, refer to the table 2, question number 5. We have to find the median of the given data. To find the median of this data, it is given number of cases. How to find out the median? 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, okay. It is the frequency, that is number of cases. What is it? 8, 16,
10, 42, 24, and this is the data. Now you have to find out the median of this data. First of all, students, you have to take cumulative frequency. Cumulative frequency. और इसको हम डिनोट करते हैं CFC. What is this? ये जो आपकी frequency given है बच्चे, you keep on adding this. Here is 8, 8 plus 16, 24, 24 plus 10, 34, 34 plus 42, 76 plus 100. Is this clear बच्चों? Is this clear? ये आपका n हो जाता है 112. Any doubt till now? If you have, is this clear? Please raise your hands. अगर नहीं clear है तो बच्चे please ask the questions. Right? Now the formula for median is L plus n by 2 minus CF upon F. ये फार्मूला होता है बच्चों. I'll explain you the meaning of every term. Now total terms are 112. Total terms are 112. 112 is even or odd? 112 is even or odd बच्चों? Even है बच्चे? तो n is even. n यहाँ पे क्या है? Even. So what will be the median term? 2 th term plus n by 2 plus 1th term. By 2 means, what is n by 2? 112 by plus 112 by 2 plus 1th term, right? 5 by 2 means 56th and 57th term. Now student, you have to check where lies the 56th and 57th term. For this you have to refer to the cumulative frequency. What is the meaning of this? The first 8 term of the data fall in the interval 5 to 15. Next 24 falls in the data 15 to 25. Next 34 falls. Next 10 falls in this data, and so on. So 57 and 56 term falls in this interval. इस इंटरवल में फॉल कर रही है बच्चों, कि 34 टर्म्स तक यहाँ पे आ गया. उसके बाद till 76 term fall in this interval. So 56 and 57 term will fall in the interval 35 to 45. Is this clear or not? This is the most important point. If it is not clear, this question is bound to be wrong. If this concept is clear, then we'll move forward. Is this clear to everyone? Please raise your hands. I think काफी बच्चों को नहीं clear है. Once again I'll explain this. देखिए बच्चों, आपको मैंने बताया बेटा, जब भी आपको मीडियन लेना है, you have to arrange the data and take the middlemost term. Middlemost term लेने के लिए if it is odd, तो बड़ा सिंपल सा है जी. odd नंबर में एक ऐड किया, उसको डिवाइड किया 2 से. Whichever terms comes, that is the median term. But if it is even, then you will have 2 median terms. 2 मिडल वाली टर्म होंगी. वो कैसे फाइंड आउट करनी है? n को 2 से डिवाइड करना है प्लस n by 2 plus 1th term. मतलब in this case the total number of terms are 112. 112 को 2 से डिवाइड किया, it comes out to be 56. 56 में एक ऐड किया, that is 56 plus 1, 57 term. स्टूडेंट डोंट टॉक. सर के साथ जो 2 बच्चे बैठे हैं, सर प्लीज टेक केयर. आपके साथ में बैठ के दोनों गप्पे मार रहे हैं. I can see each one of you very clearly. If your pen भी मूव कर रहा है ना, मुझे बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है बच्चे. जो नहीं कर रहा है तब भी नजर आ रहा है. Right? So I was explaining you the total terms are 112. 112 divided by 2 comes out to be 56. And next term is 57, since we have 2 middle terms. So 56 and 57 terms fall in this interval, student, right? And 57 term
ये इंटरवल में लाई कर रही है, राइट? नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. If this is clear to you, we'll move to the next step. Next step क्या है बच्चों? देखिए, अब you come to know about the median class. This class is known as, इस क्लास को क्या बोलते हैं बच्चों? Median class. What is this called as? You can have the MCQs on finding out the median class, right? So once you find out the median class, the lower term, the lower limit of the median class is at lower limit of the median class is L. Frequency of the median class is F, right? The cumulative frequency preceding the median class is cumulative frequency CF, and H is the class interval. H is the class interval. तो H कितना आ गया बच्चों यहाँ पे? So now what you have got? H is 10. H is the class width. 5 to 15, 15 to 25. Class width is 10. Comes down to be 25. 10 is 112. F comes out to be 34. F is 42. So you got everything. Now please find out the median of this data, students. B option. Everything is, please everyone do it. Better कीजिए जरा. And students, please do this calculation part. B option. B option Yes, sir. 48.6. B option 40.2. चेक कर लेते हैं बेटा एक बार. L plus n by 2, 112 by 2, that is 56, minus CF 24, divided by F 42 into H, that comes out to be 10. ठीक है बच्चों? इसको calculate किया तो this comes out to be, इसको कैलकुलेट किया बेटा तो m comes out to be 35 plus 22 by 42 21 21 5s are 105 50.2. ये 40.2 आ रहा है, 48.6 तो नहीं आ रहा है जी, 40.2 आ रहा है बेटा. The student who got the 48.6 is the wrong answer. It comes out to be 40.2. Is this clear? Is this clear बच्चों? हाँ जी बच्चे, किसी की कैलकुलेशन में अभी भी 48.6 आ रहा है तो बता दो मुझे. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा. देयर इज, चलिए स्टूडेंट्स, लुक एट द क्वेश्चन नंबर. अब फर्स्ट एमसीक्यू पे आ जाइए जरा. फर्स्ट एमसीक्यू, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन is obtained by adding the frequency of all the classes. Please tell me which option. Please tell me student which option. Mic on कीजिए अपना and please let me know.
यस बच्चों माइक ऑन कीजिए जरा प्लीज. कैन यू हियर मी? प्लीज स्विच ऑन योर माइक. Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी बच्चे, तो कौन सी ऑप्शन आएगी इसकी? यस टेल मी. बी ऑप्शन, क्लासेस फॉलोइंग द मीडियन क्लास. देखिए बच्चे, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द क्लासेस. ऑल द क्लासेस डी ऑप्शन आएगा बच्चे. For calculating median is obtained by adding the frequency of all the classes. टोटल है ना, हमने टोटल फाइंड आउट किया है ना. दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, ये फाइंड आउट किया है, राइट. ठीक है जी. चलिए बच्चे, इसके बाद यू विल हैव द साइंस क्लास. साइंस क्लास मैम लेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग जी. थैंक्स टू ऑल द टीचर्स. हाँ जी, सनफ्लावर में बेटा, सनफ्लावर में रोल नंबर 13. सनफ्लावर रोल नंबर 13, आ जाओ बेटा, माइक के पास आ जाओ जल्दी से. आ जाओ बेटा, आ जाओ जल्दी से. हाँ, मुझे बताइए, ये वाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बाय अवर बॉडी. हाँ जी बेटा, बिल्कुल ठीक है, यहाँ से बोलो. हाँ, why control and coordination is required by our body. अच्छा चलो बैठ. Why control and coordination? To function, for proper functioning of the body. लिख लो इसका आंसर क्या आएगा. ये आए हुए, ये सारे PYQs है बेटा, और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है which are going to come in your exam. So why control and coordination is required? For proper functioning of the body. For proper functioning of the body. To respond the specific stimuli. To respond the, second answer, second इसका आ जाता है to respond the specific stimuli. थर्ड आंसर आ जाता है to protect body from, to protect body from various harmful stimuli. To protect body from various harmful stimuli. नेक्स्ट क्वेश्चन आप कॉपी में ही लिखिए. विच सिस्टम्स ऑफ अवर बॉडी, which systems of our body are responsible for control and coordination? Which systems of our body are responsible for control and coordination? Roll number 26, Rose section. Somebody switch on the mic. Rose में roll number 21. Zoom से mic on कीजिए. चलिए 21 roll number. Which systems, हाँ जी, which systems of our body helps in control and coordination? Absent. चलो कोई 22 आ जाए, 21 नहीं तो 22 आ जाइए. आ जाओ क्विकली. कौन है 22? कौन है उसके? क्या है यार? Pressure 26. क्या स्पीड? क्या 22 को? क्या स्पीड? अच्छा ऐसे तो मत बैठो, जल्दी से आओ. नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी. हमारी बॉडी में कौन से सिस्टम्स है. आजा आजा जल्दी से, कैसे बैठे हो?
हमारी बॉडी में कौन से सिस्टम्स है, मैं हिंदी पंजाबी दोनों में बता सकती हूँ, कि जो हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। कौन कंट्रोल कर रहा है हमारी बॉडी को? कौन कंट्रोल कर रहा है? इन कंट्रोल, नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। और कौन कंट्रोल करता है? है कॉर्ड, वो तो नर्वस सिस्टम का ही पार्ट आ गया ना बेटा। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तो नर्वस सिस्टम का पार्ट आ गया। और कौन सा? तो डिफरेंट हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक, बैठो, राइट ऑन। कौन से पार्ट्स है हमारी बॉडी के? बेटा उठा करो जल्दी से, टाइम थोड़ा होता है, पढ़ाना हमने बहुत कुछ है, बताना बहुत कुछ है, एंड क्लास 10th स्टूडेंट्स, सो मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो कौन से हैं? दैट इज नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये दो सिस्टम्स है जो हमारी बॉडी को के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं और आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन से क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, आपकी बुक में एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई डेंजर आ गया, कोई शेर हमारे पीछे बढ़ गया, तो क्या होगा? हमने तेज भागना है ना। एक कहावत है ना कि कौन तेज भागता है, इंसान तेज भागता है कि शेर तेज भागता है? तो वो कहते हैं जब ह्यूमन बीइंग के पीछे शेर पड़ जाए तो ह्यूमन बीइंग ही तेज भागता है, ठीक है। सो कैसे भागता है तेज? कभी तो ऐसे लगता है इतनी तेज तो भागा नहीं जाएगा, कैसे हम तेज भाग लेते हैं? तो कैसे? द मसल्स गेट एक्टिवेटेड, मसल्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है, उसमें बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो होता है। ब्लड फ्लो कब होगा? जब ब्लड वेसल्स डायलेट करेंगी। और क्या होता है? ब्लड फ्लो कब ज्यादा होगा? जब हार्ट बीट तेज हो जाएगी, राइट। तो क्या यहाँ पे तीन मेन चीजें कौन सी कोऑर्डिनेट की? हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड मसल्स ऑफ द लेग्स, ये सब आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तभी हम भाग पा रहे हैं। और इन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन कंट्रोल या नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है या एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल कर रहा है? इज इट ओके? क्लियर? कोऑर्डिनेशन का मतलब पता चला, ठीक है। आपके स्कूल में कोऑर्डिनेटर है मैम, वो क्या कोऑर्डिनेट करती है? सभी क्लासेस में देख रही है कहाँ पे टीचर आई है, कहाँ पे नहीं आई, कौन से बच्चे शोर कर रहे हैं, तो वो सब टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है कि यहाँ पे एब्सेंट है, आपका ये पीरियड फ्री है, आप जाके वहां पे काम करोगे। ये बच्चे ने ये काम करना है, डांस में पार्टिसिपेट करना है, इस बच्चे ने योगा में पार्टिसिपेट करना है, लाइक दिस इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू, यस। लोटस, लोटस में आ जाइए बेटा। 29 रोल नंबर, जल्दी से खड़े हो जाओ। रोल नंबर 29 लोटस। 29 नहीं है तो उसके आगे पीछे वाले आ जाओ, 28 आ जाओ, 30 आ जाओ, बट somebody कम। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे फटाफट से आओ, पहला क्वेश्चन सबको आता है, आ जाओ क्विक। वेरी गुड, पहले माइक ऑन करो और फिर आंसर करना। सबसे इजी क्वेश्चन, कोई उठ के दे देता कि मेरा तो पीछा छूटेगा आंसर करने से, मैं आंसर दूं। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम? मैम न्यूरॉन। न्यूरॉन। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन बता दो जल्दी से। व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन्स? 3 पार्ट्स बताओ जल्दी से। मैम ब्रेन। ब्रेन? न्यूरॉन का ब्रेन? मैम डेंड्राइट। डेंड्राइट। सेकेंड? एक्सॉन। एक्सॉन। थर्ड? सेल बॉडी। पीछे से आंसर आ गया है, चलो बैठो। चलिए हम, दिस इज न्यूरॉन। न्यूरॉन में आप क्या देख रहे हो? ये जो ब्रांचेस नजर आ रही है, दीज आर डेंड्राइट्स, ठीक है। उसके बाद सो दीज आर, ये जो है, ये जो है दीज आर डेंड्राइट्स। ये जो बीच में है, दिस इज सोमा या सेल बॉडी या साइटोन। ये आप बनाओ जरा जल्दी से, यहां पर भी आपको दिखाएंगे।
These are dendrites. This is cyton. बना लो जल्दी से. This is axon or nerve fiber. Axon or nerve fiber. And इसके एंड में nerve endings. These are nerve endings. Everybody draw it. Or axon terminals. Nerve endings or axon terminals. क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड गिव द फंक्शंस ऑफ इट्स वेरियस पार्ट्स. ठीक है, तो कौन कौन से मेन पार्ट्स है? दैट इज डेंड्राइट्स, साइटोन, एक्सॉन. 3 पार्ट्स. डेंड्राइट्स के टिप पे लिखो, डेंड्राइट्स के क्या फंक्शन है? इट हैज रिसेप्टर्स एट इट्स टिप. डेंड्राइट्स के क्या है? रिसेप्टर्स प्रेजेंट है. इट हैज रिसेप्टर्स at its tip, which receive stimulus. Stimulus क्या है? Such as temperature, such as sound, such as light, such as various chemicals. ये सब stimulus है. Which receive various stimulus and converts it into electrical impulse. Dendrites has receptors which receive stimulus and convert it into electrical impulse. Cyton. Cyton का क्या function है? That is, it synthesizes neurotransmitters. It synthesizes neurotransmitters. और एक्सॉन का क्या फंक्शन है? इट ट्रांसपोर्ट नर्व इंपल्स जो कहां पे बनी है? डेंड्राइट्स में, या इलेक्ट्रिकल इंपल्स टू द नर्व एंडिंग्स. एक्सॉन का काम क्या है? सिर्फ ट्रांसमिशन का, ट्रांसफर का. ठीक है जी. So these are the functions of different parts of the neuron. So this is nucleus present in the cyton. This is axon. ये भी हम माइलिन शीट की बात नहीं करेंगे. And these are axon terminals या nerve endings. Functions मैंने आपको बता दिया है. Dendrites, cyton, axon terminal या nerve endings. Dendrites receive करते हैं स्टिमुलस को और उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, इलेक्ट्रिकल करंट में. एंड वो करंट जो है वो एक्सॉन के थ्रू टर्मिनल्स में जाता है और यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसाइज हो. ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि इज न्यूरॉन यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर? जल्दी से फिंगर्स के थ्रू बताएंगे.
यूनिसेलुलर की बहुत सारे, मल्टी सेलुलर। जल्दी से रेज योर हैंड्स कि वन एक सेल का कि बहुत सारे सेल्स का। हाँ, मुझे रोज से आंसर आ रहा है। चलिए, मुझे पता चल गया रोज का। सनफ्लावर, आप बताइए यूनिसेलुलर की बहुत सारे सेल्स। रेज योर हैंड्स जल्दी से। ओके, एंड व्हाट अबाउट लोटस, यूनिसेलुलर की मल्टी सेलुलर? सिर्फ आंसर सनफ्लावर का ठीक है बेटा। एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, कहीं और तो न्यूक्लियस नजर ही नहीं आ रहा है। ठीक है, एक यही न्यूक्लियस है। सो इट इज न्यूरॉन इज यूनिसेलुलर विच हैज डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, लिख लो, न्यूरॉन जो है वो एक ही सेल है। न्यूरॉन इज यूनिसेलुलर। नेक्स्ट आ जाइए, डिफरेंट रिसेप्टर्स। राइट डाउन, डिफरेंट रिसेप्टर्स है ना। डेंड्राइट्स के ऊपर रिसेप्टर्स है, पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स है अलग अलग जगह पे। सबसे पहले इस तरह से कॉलम बना लेना। यहां पे लिखना रिसेप्टर्स, फिर है लोकेशन, फिर है फंक्शन। इस तरह से कॉलम्स बनाओ। फोनो रिसेप्टर्स, आप पूरा लिखना। फोनो रिसेप्टर्स कहां पे प्रेजेंट है? इंटरनल ईयर में। क्या फंक्शन है? रिसीव साउंड एंड स्टिमुलाई फॉर बैलेंस। हमारी बॉडी के बैलेंस को ये स्टिमुलस ले रही। नेक्स्ट आ जाता है बेटा फोटो रिसेप्टर्स। कहां पे प्रेजेंट है? आई में प्रेजेंट है। रिसीव स्टिमुलस ऑफ लाइट। नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्शन मीन स्मेल, कहां पे प्रेजेंट होंगे? नोज में। रिसीव स्टिमुलस ऑफ स्मेल। स्टिमुलस ऑफ स्मेल। देन थर्मोरिसेप्टर्स, थर्मो मीन्स टेम्परेचर, कहां पे? स्किन में प्रेजेंट है। रिसीव स्टिमुलस ऑफ टेम्परेचर। और फिफ्थ आ जाते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स, कहां पे प्रेजेंट है? टंग। स्टिमुलस ऑफ टेस्ट। गस्टेटरी रिसेप्टर्स 5 टाइप के रिसेप्टर है, तो बहुत सारे हैं हमारी बॉडी में, बट ये मेन हम 5 आपके लेवल पे पढ़ते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर्स लिखते चलना है ना, ताकि कॉलम में उसके बाद आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम से पहले दिन बुक्स तो पढ़नी है, बट एग्जाम से पहले दिन जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फटाफट से पढ़ोगे, काम हो जाएगा। ठीक है जी। सो रिसीव स्टिमुलस ऑफ स्मेल टेस्ट, दैट इज गस्टेटरी रिसेप्टर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा
अब पूरी बॉडी में एक ही न्यूरॉन तो नहीं है, देयर आर 100 बिलियन न्यूरॉन्स इन अवर बॉडी, ठीक है। वन न्यूरॉन send message to another send message to another, and finally it reaches the central nervous system. तो सबसे पहले तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि स्टिमुलस किसने लिया, रिसेप्टर्स ने लिया। रिसेप्टर्स ने स्टिमुलस किसको पास किया, ध्यान से देखो, ये बच्चों को ना क्लैरिटी नहीं होती। सेंसरी नर्व्स को, बहुत सारे नर्व फाइबर्स हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह पास हुए स्टिमुलस। फाइनली कहां पे पहुंचा, ब्रेन में पहुंचा। ब्रेन ने क्या किया, इंटरप्रिटेशन कि ये स्टिमुलस क्या है, एंड जनरेट मैसेज। कि भाई इस स्टिमुलस का क्या आंसर करना है। ये मैसेज किस में आया, दैट इज मोटर नर्व्स। ये मैसेज आ गया मोटर नर्व्स में, और मोटर नर्व्स ने ये मैसेज किसको दिया, इफेक्टर्स को दिया। और ये इफेक्टर्स क्या है, रिसेप्टर्स तो आपको पता है सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट है। इफेक्टर्स क्या है, कहां पे मैसेज आया, दैट इज मसल्स एंड ग्लैंड्स। मसल्स एंड ग्लैंड्स, ये इफेक्टर्स है। रिसेप्टर्स बहुत सारे हैं, इफेक्टर्स दो ही तरह के हैं, मसल्स एंड ग्लैंड्स। ठीक है जी, इज इट ओके। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हाउ डू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, how do electrical impulse transport या is transported, how do electrical impulses transported from one neuron to another neuron, from one neuron to the adjacent neuron। ठीक है, यहां पे एक लाइन हम करेंगे, फिर हम उसका फिनोमिना बताएंगे। सो राइट डाउन, द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स is transferred from one neuron to adjacent neuron through synapse। through synapse। अब बात आ जाती है साइनेप्स क्या है। बच्चे क्या सोचते हैं कि ये जो दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप है ये साइनेप्स है, नहीं बेटा, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, साइनेप्टिक गैप है। साइनेप्स क्या है, साइनेप्स है दो न्यूरॉन्स का कनेक्शन, सिंपल, इट इज द, राइट डाउन, व्हाट इज साइनेप्स, synapse is the intimate connection between adjacent neuron। simple, gap नहीं हम कहेंगे, it is the intimate connection between adjacent neurons where क्या होता है synapse पे, लिख लो everybody, where impulse is transported या transferred, where the electrical impulse is transferred from
nerve ending nerve endings of one neuron to dendrites of adjacent neuron. Where the nerve impulse या electrical impulse is transferred from nerve endings of one neuron to dendrites of adjacent neuron. ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे ट्रांसफर हो रही है. नेक्स्ट आ जाइए प्रोसेस ऑफ transfer of impulse at synapse. Process of transfer of impulse at synapse. मैं इसको, ये जो है इसको मैग्नीफाई कर रही, मैग्नीफाइड है, राइट. सो दिस इज मैग्नीफाइड nerve ending. और दूसरी तरफ हम इसको मैग्नीफाई कर रहे हैं. This is magnified dendrite. डेंड्राइट्स के ऊपर मैंने बताया आपको रिसेप्टर्स प्रेजेंट है. These are receptors. ये क्या चीज है, दिस इज न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स. नर्व एंडिंग्स में ये जो नॉब है इसके अंदर छोटी छोटी पॉकेट्स है. दीज आर कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स. ये वेसिकल्स इस मेम्ब्रेन से फ्यूज होकर, ये है गैप, साइनेप्टिक गैप, यहां पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है. ये क्या है, मैं एंटी लिख रही हूं, न्यूरोट्रांसमीटर. और ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके यहाँ पे रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है. ये पहले बना लो, मैं इसका प्रोसेस लिखवाती हूँ आप. मे आई जूम इट. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी. ठीक है, नहीं क्लियर, एंटी मतलब न्यूरोट्रांसमीटर. magnified nerve ending of one neuron and magnified dendrite of
बेटा जितना डायग्राम्स बना के काम करोगे बायोलॉजी में उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। जल्दी से, कहां पे घूम रहे हो बेटा लोटस बॉयज? क्लास में कैसे घूम लेते हो? एवरीबॉडी जल्दी से ड्रॉ करो, फिर हम प्रोसेस कर। चलो लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, when the electrical impulse reaches the nerve ending, when the, write down everybody, लिख लो तभी समझ में आएगा क्या कैसे काम हो रहा है। when the electrical impulse reaches the nerve ending through axon, comma, some of the neurotransmitter vesicles, some of the neurotransmitter vesicles fuses with the, लोटस बेटा जिन्होंने जाना है वो जाएं, शोर ना करें क्लास में। Some of the neurotransmitter vesicles fuse with the membrane, and pores neurotransmitter, P-O-U-R-S, pores neurotransmitter in the gap region. Next point, the neurotransmitter binds with the receptors, रोज बॉयज इधर ध्यान दो, बाहर छोड़ दो, बाहर क्या हो रहा है छोड़ो। द न्यूरोट्रांसमीटर लिख नहीं रहे, द न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड्स विद द रिसेप्टर्स on the dendrites of adjacent neuron. और न्यूरोट्रांसमीटर क्या कर रहे हैं, अपने साथ इंपल्स को लेके जा रहे हैं, एंड दस द न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड्स विद द रिसेप्टर्स ऑन द डेंड्राइट्स ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन, साथ वाले न्यूरॉन पे, एंड दस ट्रांसफर्स the nerve impulse to the adjacent neuron. Thus transfers the nerve impulse to the adjacent neuron. ठीक है जी? So this is about synapse. बस हम 2 मिनट और लेंगे। चलिए जी, तो सिग्नल्स कैसे पास होते हैं ये इन ब्रीफ हम बताते हैं। सबसे पहले क्या लिया, डेंड्राइट्स ने सिग्नल को रिसीव किया, एवरीबडी हियर, डेंड्राइट्स ने रिसीव किया, converted into electrical impulse. This electrical impulse passes from cyton to axon, then axon terminal, और axon terminal ने
किसको दिया? डेंड्राइट्स ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स. इज इट ओके? ठीक है जी. सो दिस इज अबाउट योर सिग्नल्स कैसे पास होते हैं बिटवीन एडजेसेंट न्यूरॉन. देन न्यूरॉन इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो फटाफट से हम जो है ये लास्ट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ. बस ये सबने अपनी कॉपी को थोड़ा सा, मतलब कॉपी ऐसे आती है उसको ऐसे कर लो ताकि पूरा टेबल बन जाए. नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सेंटर में प्रेजेंट है ये आप देख रहे हो, और जो साइड में नर्व्स निकल रही हैं दैट आर सेंट्रल नर्वस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इसमें क्या आ जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वेरियस नर्व्स, बहुत सारी नर्व्स है. ब्रेन के कौन से पार्ट्स आ जाते हैं? और आप यहाँ पे देख भी रहे हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बीच में साइड में नर्व्स है बहुत सारे. ब्रेन के पार्ट आ जाते हैं बेटा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन के दो पार्ट्स है, सेरिब्रम एंड हाइपोथैलेमस. मिड ब्रेन के पार्ट्स नहीं है, मतलब है तो सही बट नॉट एट योर लेवल. हिंड ब्रेन, cerebellum and medulla oblongata. Cerebellum and medulla oblongata. These are the various parts. ठीक है, इनके फंक्शंस पता होंगे. जल्दी से हम करें, जल्दी से. यस, सारे अपने माइक्स ऑन कर लो, माइक्स ऑन करो फटाफट से. रोल नंबर 2 सनफ्लावर, रोल नंबर 2 सनफ्लावर. जल्दी से, इसके बाद आपका लंच टाइम है इसलिए हम जल्दी से करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, रोल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2. द केमिकल सब्सटेंस रिलीज्ड एट द साइनेप्स आर कॉल्ड. क्या है? पूरा बोलो, क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा बोलो. एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, न्यूरोट्रांसमीटर, एंटीबॉडीज है, क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स, बिल्कुल ठीक है. लोटस में रोल नंबर 3, जल्दी से जल्दी से. रोल नंबर 3. द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, जो हमें ये मैक्सिमम ये वाला पार्ट नजर आ रहा है, ये क्या है? लार्जेस्ट पार्ट हमारे दोनों साइड पे है. कौन सा? से सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा की कौन? सेरिब्रम. ये वैसे मुझे सनफ्लावर से आंसर आ गया बट चलिए, नो वरीज, इट इज सेरिब्रम. बी ऑप्शन है. अच्छा, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ के क्वेश्चन नंबर 5. रोज ने अपना माइक नहीं ऑन किया. रोज अपना माइक ऑन करो बेटा. यस, हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर. रोल नंबर 5, रोज रोल नंबर 5. ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर एंड हंगर, बिल्कुल ठीक है. कोऑर्डिनेटिंग बैलेंस, आपने देखा है जो, अच्छा चलिए, जो ड्रंकन पर्सन है वो नाली में गिरते फिरते है ना.
उनका बैलेंस नहीं मेंटेन होता, वो प्रॉपर चल नहीं पाते, बिकॉज एल्कोहल अफेक्ट्स। यस, सनफ्लावर रोल नंबर 10, सनफ्लावर रोल नंबर 10, एल्कोहल इफेक्ट्स है नहीं है? अच्छा है। एल्कोहल इफेक्ट्स, इधर देखो मेरा क्वेश्चन, उसको छोड़ो, उस क्वेश्चन को छोड़ो। एल्कोहल इफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द ब्रेन ड्यू टू विच पर्सन कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। कभी इधर गिरता है, कभी उधर गिरता है, कभी नालियों में, कभी गटर में, कहीं भी गिरता है। हाँ, ब्रम को उसने इफेक्ट किया, सेरिबेलम को किया, मेडुला ऑब्लोंगेटा को किया, किसको इफेक्ट किया? सेरिबेलम है बेटा, ब्रम नहीं है। हम जो सीधे चल रहे हैं, आप जरा चल के दिखाओ सीधे, है ना? तो वो किसके कारण है? हाँ, चल सीधा चल पा रहे हैं ना, हमारा पोस्चर है, इरेक्ट पोस्चर है, हर आर्म स्ट्रेट लाइन में भी चल पा रहे हैं। सो दैट इज ड्यू टू सेरिबेलम। ठीक है, सो आंसर इज एल्कोहल इफेक्ट्स। यहां पे कहीं वर्कशीट में लिख लो, एल्कोहल अफेक्ट सेरिबेलम ड्यू टू विच पर्सन एल्कोहलिक पर्सन कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। तो ये भी, which area of brain is responsible for coordinating balance and fine motor movements? That is cerebellum. Person X met with an accident and injured a part of hind brain. Identify. अच्छा, मुझे अब जल्दी से बताइए कि जो ब्लड प्रेशर है, वोमिटिंग है, इजेशन है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो अगर हिंड पार्ट डैमेज हो रहा है तो आंसर है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो यहां पे साइड में लिख लो, ड्यू टू इंजरी ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, ड्यू टू इंजरी ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्वेश्चन नंबर 9 काट दो, ये आपके सिलेबस का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, रोज, रोज रोल नंबर 11, रोल नंबर 11 रोज, जल्दी से। डैमेज ऑफ विच एरिया ऑफ द ब्रेन वुड मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन डेफिशिएट इन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। मतलब ठीक तरह से बोल नहीं पा रहे, जो बोल रहा है उसको ध्यान से, हमें पता नहीं चल रहा क्या है, कौन कर रहा है? सेरिब्रम। सेरिब्रम हमारे को विजन दे रहा है, सेरिब्रम हमें सुनने की शक्ति दे रहा है, जितने भी सेंसरी इंपल्सेस है, लैंग्वेज की, लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन की, ये सब कौन कर रहा है? सेरिब्रम कर रहा है। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन पूरी आंख हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। सनफ्लावर, सनफ्लावर रोल नंबर 15, सनफ्लावर रोल नंबर 15, रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट, लंग्स। जल्दी से, स्पाइनल कॉर्ड, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, लोटस रोल नंबर 12, लोटस रोल नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से। ये जो बीच में दिख रहा है, मोटर न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन के बीच में जो पार्ट होता है, व्हाट इज दैट इन रिफ्लेक्स आर्क? कोई आके बताए, हाँ जी, जल्दी से आओ, जल्दी से। यस, इट इज नहीं, ये आंख के बीच में क्या, आर्क तो ठीक है, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन, ये मोटर न्यूरॉन है, सॉरी ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन है, इन दोनों के बीच में क्या है? दिस इज इंटरन्यूरॉन, दिस इज इंटरन्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 12 डी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, यस, रोज, रोज में रोल नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 13, 19, जल्दी से आ जाओ। आंसर वैसे मुझे मिल गया, बट बताएंगे ये फिर भी। हाँ, कौन सी ऑप्शन आएगी? ऑप्शन ए, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इफेक्टर। बट यहां पे थोड़ा सा बीच में आ जाएगा रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन्स, फिर आ जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, भी स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट आ जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14, सनफ्लावर में रोल नंबर 24, बैठो बेटा, सनफ्लावर रोल नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से। प्रोटेक्टिव जो है,
E या D नहीं बेटा, it is A. That is blinking in response to bright light. अगर हम blink नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट से हमारा रेटिना डैमेज हो सकता है. प्रोटेक्टिव कौन सा है? ऑप्शन ए, ब्लिंकिंग ऑफ आईज इन ब्राइट लाइट. बैठो बेटा. साइनेप्सिस आर द गैप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स. ट्रू है ये. साइनेप्सिस अलाउ द डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन. नहीं, केमिकल कनेक्शन है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है. केमिकल्स के थ्रू जा रही है. तो असम्पशन ठीक है, रीजन गलत है. ऑप्शन सी लिख लो यहां पे. ऑप्शन 3. लोटस में रोल नंबर 16, रोल नंबर 16 लोटस. हाँ जी बेटा. मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शन सच एज हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग. ट्रू की फॉल्स? दिस इज ट्रू. मेडुला ऑब्लोंगेटा इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम. बेटा देखो, ये स्टेम आपको नजर आ रही है. दिस इज स्टेम, है ना. ये ब्रेन है, ये पूरी इसकी स्टेम है. दिस इज ऑल्सो ट्रू. ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा इज ए, बट इट्स नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो आंसर बी, बॉम्बे. बैठो बेटा. क्वेश्चन नंबर 17 रोज. क्वेश्चन नंबर 17 रोल नंबर 17. सारा रोल नंबर. असर्शन बताइए, करेक्ट की, ट्रू की फॉल्स? ट्रू है. रिसेप्टर्स आर जनरली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन्स. रीजन, डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स हैव डिफरेंट रिसेप्टर्स. ट्रू की फॉल्स? True. This is also true, but does not explain assertion. Option B, बॉम्बे. ये बाकी के जो है, यहाँ पे बस एक क्वेश्चन मैं बताऊंगी. क्वेश्चन नंबर 18 का जो सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इन अवर बॉडी? 2 फंक्शंस है, साथ ही लिख लो. रिसीव द स्टिमुलस, और सेकेंड फंक्शन है कन्वर्ट द स्टिमुलस इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्स. रिसीविंग तो याद रहती है बच्चों को, कन्वर्जन नहीं याद रहती. कन्वर्ट द स्टिमुलस इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्स. ठीक है. और नेक्स्ट टाइम हम प्रोटेक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम करेंगे, और बाकी का आई होप मैक्सिमम नर्वस सिस्टम हमारा हो गया. फंक्शंस आपको पता है ब्रेन के, और हम प्रोटेक्शन वाला पार्ट नेक्स्ट टाइम करेंगे. एंड वी विल डू that is chemical coordination, that is hormones या endocrine system. ठीक है बेटा. thank you teachers. bye bye.